Hello, dear students. Very good morning. You please open the page number 30 of your textbook, Flamingo. The assignment for we people is talking about the text. The question number one rather, all we have to fear is fear itself. Have you ever had a fear that you have now overcome? Share your experience with your partner. अगर आप खौफजदा हैं और खौफ होना बजाय खुद एक खौफ है, या दूसरे अल्फाज में हम ये कहेंगे कि खौफ बजाय खुद एक बीमारी है। अगर आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि आप किसी चीज़ से डर रहे हैं, आपको किसी चीज़ का खौफ है, क्या आप आज आपने इस पर काबू पा लिया है, आज आप बेटर महसूस कर रहे हैं, बेटर फील कर रहे हैं, तो आपकी फिर जो तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, वो दूसरों के साथ भी आप शेयर करेंगे, जैसे कि आपका पार्टनर हो, आपका फ्रेंड हो, आपका क्लासमेट हो, जो भी हो। ये क्वेश्चन है, लेट्स डिस्कस। इफ सच टास्क इज posed, if such question is asked in the examination, how will you dispose it of, and how will you write a correct and detailed answer? I must have been about 12 or 13 years old. It was an election day. All streets, jokes, lanes, and bylanes of my town were flooded with people. You will write like this: when I was only a teenager, I was a little boy. My age was only 12 or 13 years. And then it was an election day. People were going to cast their votes. When it is a voting day, a lot of hustle and bustle is seen all over. And same happened in that day, and the streets, jokes, lanes, and violence were flooded with people. That's what we write. After the polling, some children initiated the bursting of crackers. Now the polling were over. As far as rightly said by the Kamala Das, a great Indian poetess, she says that children are the funny creatures. When they see or when they meet something which they find very interesting, they enjoy and they try to make things very interesting and compatible to them. Same happened in with that day when polling was over. They start to bursting some crackers. ये बच्चे लोग जो होते हैं, बड़े अजीब गरीब लोग होते हैं, वो अपने मज़े के लिए कुछ किसी हद तक भी जा सकते हैं। तो उन्होंने उस दिन ऐसा ही किया कि वोटिंग के दिन जब लोग घरों से बाहर आए थे, हर एक गली कोचा लोगों से भरा था, लोग जा रहे थे, वोट डाल रहे थे। तो वोटिंग जब ओवर हो गई तो बच्चों ने सोचा कि हम भी मज़ा उठाएं। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वो क्रैकर्स वो फाड़ना शुरू कर दिए। Suddenly a cracker went up and hit the thatched roof of a poor man. His hut caught fire and flames started rising up. And what happened? And there a mishap happened. A cracker rose up, a flame was there, and a
thatched roof of a poor man caught fire, and within a split of second there were flames. इन्हें हुआ ये कि एक जो पटाखा जो था वो उड़ गया, उसके साथ कुछ आग का शोला था। ये एक गरीब इंसान के छप्पर पे लगा और इसने आग पकड़ ली और जल्द ही ये आग की शोलों में तब्दील हो गया। ये कौन कह रहा है? ये आप कह रहे हैं। दिस इज ऑल इमेजिनेशन, दिस इज ऑल प्रपोजिशन, जो आप कह रहे हैं, लिख रहे हैं। इट्स नॉट नेसेसरी द एक्चुअल थिंग हैज हैपेंड with you, but you can create a story. You can create such a story, one can believe that it is a reality. His hut caught fire and flames started rising up. The poor man's son, who was a baby then, got severe burns before some brave men rescued him. And after this, some rescue work took place. Some brave men plunged, they jumped into the fire and they rescued a baby. But before they managed to rescue him, the baby had got some severe burns, fire burns. यानी कुछ बहादुर लोग इस आग में कूद पड़े बचाव के लिए। उन्होंने एक बच्चे को वहाँ से बचा लिया, लेकिन इससे पहले कि उसको बहिफाजत वो निकल आते, उसको कुछ वो छलनी हो गया था, उसकी बॉडी जो थी इफेक्ट हो गई थी बर्न से। At that very moment, I began to tremble with fear. But you are writing an answer. You imagine that what would have happened if you have seen the burning, these scars, the burning, burned body of a little boy. It is intolerable, it is unbearable. When it is unbearable, when for children who keep a weak heart, then you imagine that you began to tremble. तब आपको ये इमेजिन करना है कि अगर आप ऐसी सूरत हाल से गुजरेंगे कि आप बिल्कुल थरथराएंगे, क्योंकि आपको एक खौफ तारी होगा कि ज़िंदगी सब लोगों को प्यारी है, कहीं कहीं मुझसे ऐसा न हो जाए। My fear got augmented when the police reached the spot and questioned the boys who were exploding the crackers. And the things turned worse for the little boy, worse for you. Your fears got multiplied and they got augmented because you see the men in uniform. Men in uniform are creating the fear, because people fear that they would arrest some people, they would took to them jail, or if there is something out of control, they would fire on the people and something like that. ऐसा कुछ होता है। यानी यूनिफॉर्म में जब लोग बच्चे, खासकर बच्चे लोग जब लोगों को इन बंदों को देखते हैं जो यूनिफॉर्म पहनते हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस होते हैं, जो पुलिस होती है, जो मिलिट्री मैन होते हैं, तो बच्चे लोग इनसे डर ही जाते हैं। तो यही इस बच्चे, आप इमेजिन कीजिए कि आप भी इनको देखकर डर चुके हैं, आपके यहाँ भी एक डर पैदा हुआ है। तो आप यही लिख रहे हैं कि जो ही मैंने उनको देखा कि वो इस जगह, पहले तो डर दिल में था ही। You were not mentally stable because you have recently seen the burns of a little boy who was battling for life. And when police reached the spot and your
fears got multiplied, and they were questioning that who were exploding the crackers. ये पटाखे कौन फोड़ रहा था, ये पुलिस इसके बारे में तहकीक कर रही थी. From then I had a fear of the crackers, fire and police, and the imaginary child, or the it could be a reality that I have written here. I have written it on the basis of imagination, but it could be a reality to someone. जब भी पटाखे फोड़े जाते हैं, जब भी आग जलाई जाती है या आग लग जाती है किसी जगह से, या पुलिस को देखा जाता है, तो बहुत ही ये बंदा या ये बच्चा बहुत ही डर जाता है. ये छुपने की कोशिश करता है, अपने आप में उसे डर महसूस होता है, अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, अपने आप को ये गैर महफूज समझता है. My parents and I myself had to work hard to remove this blemish. And when I grew up, the fear was haunting me. But I myself tried my best to get rid of this fear, and I was always supported by my parents, who assured me that nothing would harm you if there is a fire. Fires can take place if there are men in uniform. The men in uniform are only to maintain law and order. They could not harm the innocents. And these were perhaps the guidance that I received from the parents, and that I myself realized. It miserably and adversely affected my personality. I was able to overcome my fears only by consulting a famous psychiatrist. But parents' guidance was not enough. I could only regain my confidence when I utilized the services of a doctor, of a psychiatrist or a psychologist, what may be the cases. यानी ये जो चीज़ें हैं, ये जो फियर्स हैं, ये किसी के कहने से कम नहीं हो गई, बल्कि मैंने खदमात हासिल की एक डॉक्टर या एक साइकेट्रिस्ट के, जिसने मुझे फिर इसके बारे में इलाज या काउंसलिंग कर दी. I still get panicked at the sight of the men in uniform. Finally, my close relative come to my rescue. He guided me to come out of the trap of the involuntary fear which used to haunt me anywhere and everywhere. और अब भी मुझे ये एहसास होता है जब भी मैं फोर्सेस को देखता हूँ, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो या लोकल पुलिस हो, जब भी मैं उन लोगों को देखता हूँ तो एक वहम सा हो जाता है मेरे दिल में. तो अब भी मैं डर सा जाता हूँ. तो एक क्लोज रिलेटिव जो मेरा है वो मेरे काम आया, उसने मुझे बहुत गाइड किया कि जिससे मैं ये इनवॉलेंट्री फियर, यानी ये वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री में फियर है कि आप खुद यानी अपने आप को डराएं या खुद आप कोशिश करेंगे कि अपने आप को डर महसूस करने की. एंड समथिंग व्हाट हैपन्स इनवॉलेंट्री, देयर इज़ नो hand of a human being or no, it is beyond one's control. वो किसी के कंट्रोल में नहीं होता है. fear which used to haunt me anywhere and everywhere, ये जो वो डर था जो मुझे कहीं भी और हर जगह हर वक्त मुझे ये डर साथ रहता था, और इस डर के मारे मैं अपने आप को बेटर फील महसूस नहीं करता था. और आज कल जो सूरत हाल ये है कि साइकेट्रिस्ट की कंसल्टेशन से, पेरेंट्स की गाइडेंस से और इस क्लोज रिलेटिव की फाइनली जो उसने मुझे कॉन्फिडेंस दे दिया, उससे मैं इस डर से अब आज़ाद हो चुका हूँ. थैंक यू वेरी मच. ये मैंने एक क्वेश्चन डिस्क्राइब किया, ये मैंने लिखा भी. आप भी इसे आपके स्क्रीन पर ये बिल्कुल आराम से आप इसको लिख सकते हैं.
एंड थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेसन अब इसके बाद आने ही वाला है। थैंक यू।